What's up? How are you all doing? I'll just do a little of testing for the audio visual before we get started with today's session. We have an interesting session ahead of us today, by the way. So, for for all the early birds, who want to ensure that they want to crack CAT in 2020. And before we go there, before we start with the session, I'm going to just ensure that my audio visual is clear by well, checking out the same video that I'm broadcasting on my phone. Okay, so just give me a second to do that, to do the same. I think we are online. Yeah, fair enough. All right, perfect. Guys, welcome to CAT 2020 Verbal Ability Prep Orientation, and I'm your educator Anupam Mishra from my alma mater is I'm Lucknow, and this is a half an hour session where I'll try to bring to your attention certain aspects which I think are extremely important and fundamental when it comes to the preparation of any kind of entrance examination. Okay, so all right. So, in case you have any questions, in case anyone has any questions, feel free to type it in the comment section. I will be monitoring the comment section from right here in my phone. All right. So, feel free to do that. I do understand that my image is on the top right side, which is probably coming in the way of the title, but I think it's clear that the title is CAT 2020 Verbal Ability. Okay. All right, so let's start. Before we go excuse me, before we go any further, I'll just give you a brief about my credentials, which are this guy here with the long hair. This is me. This is Anupam Mishra, batch of 2018. I'm Lucknow. I graduated last year, worked with Hotstar for about a year, and then quit Hotstar to start working on some of my own ideas. Meanwhile, I make courses on Unacademy Plus. Okay, so yeah, that's something I like to do. I've worked as a verbal as well as a quant faculty before at various coaching institutes and delivered many lectures for a long time. The rest of the stuff you can read up later on. So the agenda of the session. All right, it's always important to set up to first talk about what we are going to be talking about, right? Meta discussion, as you may call it. So the first thing, the theme of the session you all know is the your orientation. It's an orientation session, right? We want to orient yourself correctly towards for having you start your preparation for CAT 2020, and especially we will be talking about the verbal ability session. So I've divided it into three parts. The first part is where we discuss what are you up against. Okay, what are you going to be facing. Okay, in which we shall talk about how the paper pattern of CAT has been over the past few years. We shall also cover the syllabus, if we may use the word, although I don't really think that the IIMs put out any kind of syllabus per se, something, at least not something explicitly written. Well, very brief intro into the question types, because it's a short session, it's a half an hour session, so yeah, a brief intro should be good enough. Okay, so that's the first part. We'll talk about what you're up against. Second, we'll talk about how to tackle it, right? How, in my opinion, and what would be the best way of tackling it. We'll talk about what I call the two types of preparation strategies, and it's not just what I call it. It's actually it's real. So we will discuss that. I call it organic preparation. The first strategy I call organic preparation. The second one I term it as inorganic preparation, and you'll see what I mean by that once we get to the section. After discussing what these strategies are, we will also talk about what strategy you should be picking up depending on where you are right now. Okay, that's the second part that we shall discuss. The final part, and I guess I can say that's the most important part, will be the action items. Okay, the action items. All right, the action items are basically your optimum. What will be the optimum plan for verbal ability CAT 2020, not 19. Sorry. We'll break down actionables with respect to your question types, etc., etc.
and I'll also take some questions in case there are any from you guys. Okay, so yeah, so the first part, let's start with the first part, which is uh, what are you up against, right? The first thing we discuss here is the, well, paper pattern over the last, I think we can say four, in fact 5 years now, right? It's 15, 16, 17, 18, 19. It's been 5 years now and they've not changed the paper pattern. Wow. I think one of the longest, one of the very few longest windows in which CAT has not tampered with the paper pattern, right? Because they changed it in 14. They had a different paper pattern in 11, then maybe a different one in 12, I guess, in fact, and even in 2009 the paper pattern was different. To the 2008, before, and before that it used to be totally offline, right? So there was a lot of turbulence until they found a balance at 2015, and ever since then we have had this paper pattern for the last 5 years. So yeah, so, and then we're focusing on the verbal ability section, right? So in this section, guys, the paper pattern has been something like this. Uh, 20, there are 34 questions in total, right? 34 questions in total, and 70% of them, okay, like 24 questions out of them are essentially just reading comprehension. It's just reading comprehension, right? Like, you have a passage, you have questions pertaining to the passage you're supposed to answer. That's it. It sounds quite simple and straightforward when you, like, on the face of it, and believe me, it is actually quite simple. But believe me, there can be some nuances that the AMS can set up for you, and thus making the paper not so easy after all. Okay, but yeah, if with the right strategy, it's not really difficult to crack this section. So 70% of the VRC section has been, in the last 5 years, your reading comprehension. There's 24 questions, which has, not always, sometimes it has 6 passages, sometimes it has 5 passages, but it generally varies between 5 or 6. Every passage has either 3 questions, 4 questions, 5 questions, or 6 questions, okay, per passage. Some of these questions are direct in nature, and many of these questions are inference based. They are not direct. Okay, some are direct, but many are indirect. Then difficulty level has ranged from moderately easy to difficult over the last 3-4 years. That's fair enough. So that's about the reading comprehension section. The second part is 30% of your verbal ability is well, verbal logic. We call it verbal logic, right? All these question types that you see in yellow on this side, that's the verbal logic part. And so that comprises parajumbles, logical continuation. Some call this para completion. Then odd one out, summary questions. People call it what do you say, para summary questions. Then you have critical reasoning. Critical reasoning has not been part of the CAT paper pattern since last few years, but at least not part of the verbal logic section. There can be sometimes there are some critical reasoning questions in the RCs, but not like pure, not direct critical reasoning questions. They haven't been part of CAT since some years, but yeah, they can be. Okay, you never know. So 30% of your questions is of the verbal ability section is your verbal logic. Okay, parajumbles, logical continuation, odd one out, summary questions, critical reasoning. Even out of these parajumbles, let me just, I think I'll just mark it here. Give me a second. Yeah, let me take a color. Yeah, maybe a different one. Just a second, guys. Out of these parajumbles and odd one out and summary questions have mainly formed the the core of your verbal logic sections in the last 2-3 years. Okay, it has only been like there have always been 4 parajumbles out of these 10 questions. There are 4 of them are parajumbles, 3 are odd one out, and 3 are your para summary questions. But that doesn't mean that we should not be ready for para completion or maybe critical reasoning. Okay, and then of course you cannot forget direct grammar questions or vocab based questions. So that you need to have some kind of contingency plan for a day when you might just encounter some direct grammar question, because it's been a while, and they might just include it again, and vocab based questions, especially when you're going for a long term preparation strategy. Okay, so that's about that. So what all can the CAT throw at you? Well, the first and foremost is of course your reading comprehension. That's why I've put it in bold, because that's the most important part. Then the next question type in order of priority is parajumbles,
after which the next question types are summary questions and odd one out questions. Okay, apart from these, CAT can also ask you logical continuation or critical reasoning, and there are, like, you should also need to have some kind of contingency prep for say question types of, I'll just take yeah, you need to have some kind of contingency prep for these question types: direct grammar questions, vocab based questions, fact infringement questions, and some of the miscellaneous questions. Okay, that's important. Next, the two that, okay guys, so now this is the crux of the session. Okay, so anyone of, okay, Sachin is here. Hello Sachin, how are you? Someone here with a very strange username has asked, can Hindi medium student crack VRs in 8 to 9 months of practicing? Can it's possible to bring 80 to 90 percentile in 8 months? What should I do in preparation? Hello there. Definitely, guys, anyone who's watching this session, stories of people who have cracked this section and have come from 9 percentile. I'm actually saying 9 percentile to 99 percentile are abundant. There are many cases. Yeah, okay. These are not people who are like, I'm not talking about just preparing for 3-4 months. These are people who are prepared for like almost 10 to 11 months, or 8 to 9 or 10 to 11 months, and you guys have that kind of time available. So yes, I think it's possible for someone who comes from a vernacular background, like you said, Hindi medium or any other medium apart from English. And yes, people have done it with the right enthusiasm, with the right direction, with the right effort, in the right direction. I think it's pretty possible, quite possible. Okay, I hope I have answered your question there. Now guys, now this is an important part. We'll come to the second part of the presentation, and this is quite important. This is quite for you important for you to understand. Preparation strategies when it comes to any kind of entrance examinations, can be divided. It can be broadly classified into 2 categories. Okay, can be broadly classified into 2 categories. The first category is organic preparation, and the second category is called, I call it your inorganic preparation. Yeah, another word you can use for them is fundamental and tactical. Okay, fundamental and tactical. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक प्रिपरेशन और मैं बात कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि when guys, I'm gonna use a little bit of Hindi in between. I hope that's okay with you, and because there might be some people from other backgrounds who might find it more easy to understand, but it's gonna be a mix of both languages, so I hope you guys don't mind. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनिक प्रिपरेशन और नॉन ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में क्या चीज़ें हैं, दोनों मतलब फ़र्क क्या है दोनों में? So organic preparation, when I talk about organic preparation, let me take the highlighter, and so when I talk about organic preparation, what I'm essentially saying is, see the kind of preparation जहाँ पे आप एक किताब उठाते हैं, you start from chapter 1, ठीक है, chapter 1 theory पढ़ा, questions, exercise 1, question 1, question 2, question 3, ऐसे से करते हुए आप जा रहे हैं. You keep solving more and more questions, then you complete chapter 1, then you go to chapter 2. वापस से पढ़ा, theory पढ़ा, फिर exercise के examples किए, फिर exercise किया. Right, so your method of preparation is quite systematic and quite linear, right? Very linear and systematic in nature, and has its own advantages. Okay, ये तो बात होगी कि ऑर्गेनिक प्रिपरेशन क्या होता है. ऑर्गेनिक प्रिपरेशन क्या नहीं होता है वो भी जानना ज़रूरी है. ऑर्गेनिक प्रिपरेशन does not really does not take a lot of input from the kind of paper from how the question papers have been recently. Okay, it does not take a lot of input from that. It just starts from the basics. The essence of organic preparation is to get your fundamentals and basics in place. Okay, which takes time, and that's why organic, right? Anything that is organic takes time, but the quality is quite good usually, right? So orientation is towards skill development, requires one to systematically go through all topics and areas one by one from scratch, often requires substantial time, and that's the major I don't know, you can call it an advantage or a disadvantage, the way you want to think about it, but yes, it requires substantial time because you're starting from scratch, you're looking at every concept in detail, you're trying to internalize everything, right? आप fundamental level से आप हर चीज़ को सही करना जा रहे हो, so उसमें समय तो लगेगा. So it often requires substantial times, but the good part about it is that the skills that you will develop, जो भी आप सीखेंगे,
यू विल बी एबल टू रिटेन दिस ओवर टाइम, बिकॉज इसमें आपने कंसेप्चुअल लेवल पे जाके काम करके आप ये सीख के आए हैं, राइट. सो यू विल बी एबल टू रिटेन दिस ओवर टाइम. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक और फंडामेंटल प्रिपरेशन मेथड. ठीक है. इनऑर्गेनिक और टैक्टिकल मेथड की बात अगर हम लोग करें, सो इट्स मोर ऑफ अ टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच. आप and guys, I'm sure that anyone who's watching this session, anyone who's not watching this session right now or might watch this session later on, all of you have been students at some point of time in your life and have appeared for exams. मैं ये आप सबने ये इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन का तरीका ट्राई किया होगा. ऑर्गेनिक शायद कि सबने नहीं किया होगा, बट इनऑर्गेनिक हर किसी ने किया होगा. इनऑर्गेनिक इज बेसिकली जस्ट टैक्टिकल मेथड कि भाई प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठाओ, देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बाद में उसके हिसाब से पढ़ने बैठो. सो it's a very test oriented approach. अभिषेक हैज़ अ क्वेश्चन, 2 year गैप 2020 ट्राई करना चाहिए कि नहीं? अभिषेक, 2 year गैप, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें? मेरे को एक बार जस्ट टेल मी अबाउट दैट, आई ट्राई टू आंसर. तो गाइस, एज आई वाज सेइंग, इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन में टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आप स्क्रैच से शुरू नहीं करते, आप सीधा रिजल्ट से शुरू करते हैं कि भाई रिजल्ट मतलब में क्या चाहिए भाई, वो आप ये नहीं देखोगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आप ये देखोगे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 क्या था पेपर में, उसके हिसाब से आप पीछे आओगे. सो यूल कम बैक, आप यूल कम इन द रिवर्स डायरेक्शन. यू स्टार्ट विद द पेपर, यू कम इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड देन सी कि क्या क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं करूँ तो मेरा पेपर के लिए तैयारी हो जाए. ये क्या करता है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, क्या करता है कि आप पेपर के बारे में तो भय पाएगा, देखा जाएगा. अभी मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट ठीक कर लो कि मतलब पेपर कैसा भी आए हो जाएगा, राइट. सो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं. सो ठीक है. तो ये बात हो रही है. तो इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन का फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, ऑर्गेनिक का फ़ायदा हमने देख लिया था. इनऑर्गेनिक का फ़ायदा ये होता है भाई कि बिकॉज आप टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेके आ रहे हैं, आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आपका कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ फटाफट सीख लेंगे कि जो कि एग्जाम में आने वाली है, बिकॉज आपका फोकस ही वही है, राइट. you'll work on topics basis your strengths and weaknesses कि दिखा यार ये वाले क्वेश्चन तो आ जाने, इसके ऊपर ध्यान में दो, जो जिसमें दिक्कत हो रही है वो देखो, उसको ठीक करो, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा. इट इज़ एन एप्ट अप्रोच व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम. जब आपके पास समय कम है तो बेटर है कि आप इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन करो. डिलीवर्स बेटर रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड. तो कम टाइम पीरियड में ये अच्छा रिजल्ट देगा. अगर आपके पास, अगर देखो भाई मैं आपको बताऊं कि आपके पास बस अगर 1 महीना है कैट देने के लिए, मान लीजिए आपके पास बस 1 महीना बचा है कैट देना है आपको, आपके पास यू जस्ट हैव 1 month रिमेनिंग. मैं आपको ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में स्क्रैच से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोलूँगा. व्हाट आई रादर आस्क यू टू डू इज, आई आस्क यू टू टेक solve some previous year's papers and then maybe start taking CAT mocks. जितने आप mocks ले सकते हो, take the mocks, then analyze them कि हाँ what are your areas of improvement, what are your areas of strength, and work on them, like troubleshoot them and again take a mock and continue this troubleshooting cycle as many times, finish as many cycles as you can basically, right. So that's an organic, you're not trying to, आप कोई चैप्टर पे नहीं जा रहे, आप ऐसे से करके उसको कर रहे हो. सो एंड उसका फ़ायदा भी होता है. तो अगर 1 महीना हुआ तो मैं आपको इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन बोलूँगा. अगर आपके पास 5, 6 महीने, 7, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11, 12, 1 साल है तो मैं आपको ऑर्गेनिक बोलूँगा. ठीक है. तो अभी इसमें बात आती है, अगला सवाल यही है ऑफ कोर्स कि यस, ऋषभ कह रहे हैं some resources from where we can obtain the good quality articles every week that will help VRC down the line. Rishabh, yes, so Rishabh, I'll tell you क्या क्या है. There is Rishabh, you can just note this down. I'm saying it here. There's something called Philosophy Now, now.com. Then there is something called Evonomics, EVONOMICS, Evonomics. And there are many, in fact. There's the Atlantic करके है. Then you have Lair View of Books. So basically there's a lot of them. In fact, I'll tell you what, you can just आपको मेरा there's a broadcast, I run a broadcast of these articles. ये जो articles आप कह रहे हैं, मैं इसका एक broadcast run करता हूँ where I try to share. It's been a while, अभी थोड़ा सा it has been dormant in the last few weeks, but it's gonna start again. So हाँ अभिषेक, I'm coming to your question. अभिषेक, I'm definitely coming to your question. मैं किसी का सवाल unanswered जाने नहीं देने वाला. Don't worry about it, okay? I held back to on your question because it was more personal in nature. मैं ऋषभ का question इसलिए आंसर कर रहा हूँ. दिनेश, all the best, all the very best, okay? मैं personal questions गए थोड़े से बाद में लूँगा. मैं थोड़े से ज़्यादा जो सबके फायदे के सवाल है वो मैं पहले उठा रहा हूँ. हाँ, प्लीज़ डोंट माइंड. मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा. ओके, ऑल द बेस्ट दिनेश. Dinesh, right? Yeah.
सो गाइज एज आई वाज सेइंग कि जो ऋषभ को मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो तो मैं वो आर्टिकल्स का एक ब्रॉडकास्ट रन करता हूँ, आपको मेरे कोई अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री प्लेटफॉर्म कहीं पे भी मैं आपको मेरा वो नंबर मिल जाएगा जो जिस पे वो ब्रॉडकास्ट है, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाल सकते हैं। यू कैन जस्ट लुक फॉर अनुपम मिश्रा 218 218 अनुपम मिश्रा 218। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डाल दीजिए, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। उसको छोड़ के भी मैं आपको कोई आप यहाँ पे तो मेरे पास यूट्यूब में मेरे को मिल नहीं रहा है कि मैं कहाँ पे टाइप करके आपको बताऊँ। कमेंट सेक्शन मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, मैं आपके सिर्फ कमेंट पढ़ सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता उसमें, अदरवाइज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। बट मैंने आपको जो कुछ नाम बताए, फिलोसफी नाउ, इवोनॉमिक्स, लेयर रिव्यू ऑफ बुक्स, द एटलांटिक, देन मीडियम हो गया, गार्जियन हो गया, इन सब में देखो 3 से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने जाओगे तो वो लोग आपसे सब्सक्रिप्शन मांगेंगे। आप हर एक में 3 आर्टिकल कर दो, आपके एक महीने के कम से कम कितने 15-20 आर्टिकल हो जाते हैं। सो दैट टेक्स केयर ऑफ इट, राइट। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट ऋषभ। अभिषेक, भाई 2 ईयर का गैप है तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि वापस से वो गैप ना हो। आप उसको जितनी जल्दी आप उसको फिल कर सकते हैं, लाइक गेट अ गुड प्रोफाइल, भले आप थोड़ा इंटर्न जैसे भी करें उसको फिल करिए और साथ साथ में प्रिपरेशन करिए जितना हो सकता है। आई अंडरस्टैंड इट्स ईजियर सेड देन डन। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मैं समझता हूँ, बट किया जा सकता है, लोग करते हैं, ठीक है। गाइस I'm gonna have to steer back to the topic here because ये ज़रूरी है थोड़ा सा, and I'll try to answer all the comments जो भी सवाल आएंगे towards the end. So the 2 types of preparation strategies मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो अभी इसमें सवाल ये आता है कि भाई कौन सा स्ट्रैटेजी अभी उठाना चाहिए या फिर कभी भी कौन सा स्ट्रैटेजी, हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा स्ट्रैटेजी उठाना है। दिस इज सो देखिए, इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी, जो ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है उसका रिजल्ट आपको ऐसे दिखता है। आपको मंथ 1 में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, 2 में थोड़ा थोड़ा दिखेगा, 3 में थोड़ा और दिखेगा, 4 में थोड़ा और दिखेगा, बट एज यू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन द रिजल्ट विल स्टार्ट शोइंग एक्सपोनेंशियली, बिकॉज आपके फंडामेंटल्स इन प्लेस आते जा रहे हैं। आपके फंडामेंटल्स जैसे जैसे इन प्लेस आएंगे वैसे वैसे आपका रिजल्ट एकदम अचानक से बढ़ता जाएगा ऊपर, राइट। सो इन द शॉर्ट टर्म यू कैन सी, शॉर्ट टर्म 1-2 महीने में, 4 महीने में इसका कोई फायदा नहीं है, पर जैसे ही आप 5-6 महीने के आगे जाते हो तो आप जो चैप्टर वाइज जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फंडामेंटल लेवल पे, उसका बहुत फर्क पड़ता है। इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन ऑन द अदर हैंड आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा, इट विल गिव यू इमीडिएट रिजल्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा अभी एक महीने में कैट का एग्जाम है, मेरे को अगर पैराजम्बल्स पढ़ना है तो मैं सीधा देखो पिछले साल में पैराजम्बल्स कैसे थे, उसको बस 1 हफ्ता लूँ और मतलब 2 दिन लूँ और पैराजम्बल्स पूरे निकाल दूँ। मतलब मैं ये सब नहीं देखूंगा कि हाँ मेरे को लॉजिक डेवलप करना है अपना वर्बल का, उससे अपने आप पैराजम्बल्स, ये सब नहीं करूँगा। मैं सीधा बस क्वेश्चन टाइप उठाऊंगा, पेपर देखूंगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा। सो इसमें क्या होता है कि आपका फटाक से आपको रिजल्ट मिलता है, पर ये जो जल्दी से रिजल्ट मिलता है वो बाद में फिर सैचुरेट हो जाता है, इट गेट्स सैचुरेटेड। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन इज नॉट ऑफ मच यूज, इट इज ऑफ यूज, ये यहाँ तक आपको लेके जाएगा जल्दी से, उसके बाद फिर आगे ये स्टैग्नेट हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये ज़रूरी है। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए, ओके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए इसमें। तो आप क्या उठाएंगे, आप बताइए क्या उठाएंगे। अगर आप देखिए, सिंपल बात है भाई, ये फंडा है, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड यू पिकअप, आपको क्या उठाना चाहिए, आपको ये उठाना चाहिए भाई। अगर आप मान लो कि आपका 9th लेट्स टेक एन आर्बिट्रेरी नंबर कि 9 महीने बाद आपका कैट है, जो कि 9 महीने बाद नहीं है, फिर भी मान लो, तो फिर आपको, अगर आप यहाँ पे हैं अभी, सो दिस इज योर प्रपोर्शन ऑफ प्रिपरेशन, ये दिस इज योर प्रिपरेशन ब्रेकअप, ये आपका प्रिपरेशन का ब्रेकअप है। मंथ 1 में दिस ब्लू, जो ब्लू वाला सेक्शन है दैट इज योर ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, रेड वाला सेक्शन है दैट इज योर इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, फंडामेंटल, टैक्टिकल, ठीक है, जो भी बोलना है। तो मंथ 1 में आप 90% जो आपका टाइम जो आप डालेंगे प्रिपरेशन में, दैट शुड बी डेडिकेटेड टू ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, एंड ओनली 10% शुड बी डेडिकेटेड टू इनऑर्गेनिक। मतलब क्या होगा 10% इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा कि भाई एक मॉक तो देख लो कि क्या होता है एग्जाम में, थोड़ा आइडिया तो आ जाए कि भाई व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोना बी अप अगेंस्ट, राइट। And once you're done with that, like as you keep progressing to month 2 पे आया तो फिर इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बढ़ेगा, एक की जगह 2 मॉक देख लेंगे, मे बी शायद थोड़े टेस्ट एनवायरनमेंट में, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट वाले एनवायरनमेंट में टेस्ट देंगे एक दो वैसे, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ योर फोकस हैज़ टू बी ऑन फंडामेंटल और ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। मंथ 3 पे आ गए आप, मंथ 3 पे आया आपका वापस से ऑर्गेनिक कम हुआ, इनऑर्गेनिक बढ़ा, ऐसे करते करते लाइक योर द प्रोपोर्शन ऑफ योर ऑर्गेनिक प्रिपरेशन हैज़ टू डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन हैज़ टू इंक्रीज कंटिन्यूसली, सच दैट बाय द टाइम यू आर जस्ट 2 months away from CAT,
आपने, और मैं ऑलमोस्ट जितना भी आपको फंडामेंटल प्रिपरेशन करना था वो आप कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे पूरे सिर्फ मॉक्स वॉक्स दे रहे हो, सिर्फ मॉक दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, और जैसे जैसे आप यहाँ पे खत्म एकदम कैट के पास आ रहे हो वैसे आपका ये ऑर्गेनिक वाला प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आप सिर्फ मॉक्स देंगे, टेस्ट देंगे, ट्रबल शूटिंग साइकिल्स रन करेंगे, बस और कुछ नहीं। दैट्स व्हाट यू कीप डूइंग अप अंटिल योर कैट, right? So it's not a question of which one strategy to pick up, it's more of a question of what should be the mix of your strategies, ki what percentage of your strategy should be organic, what percentage should be inorganic. And that depends on how far you are from the CAT exam, from any entrance examination, ये सिर्फ CAT के लिए, कोई भी entrance examination के लिए। तो okay, so I hope this क्लैरिफाइज थोड़े बहुत डाउट कि भाई कब क्या करना। तो मतलब देखो आपको मोटा मोटा समझ में आ जाना चाहिए कि कब क्या करना है, कब टेस्ट देना है, कब स्क्रैच से प्रिपेयर करना है, कब क्या करना है, ये सब ठीक है। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आरसी वारसी में क्या करना है। मैंने यहाँ पे जैसे देखो आरसी में ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में आप 40 वीक के आसपास तो कम से कम अवेलेबल हैं हमारे पास, 40 से ज़्यादा है भैया। ये तो मैंने ये क्लास पहले दूसरे टाइम दिया था, इसलिए आपके पास 42 52 या 52 वीक्स हैं। एक साल के इतना टाइम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा कम, लाइक 50 वीक्स, यू हैव अराउंड 48-50 वीक्स। ट्राई टू टारगेट टू रीड एटलीस्ट 1 बुक एंड 5 to 7 गुड आर्टिकल्स एवरी वीक। हर हफ्ते आप कोशिश करिए कि आप एक किताब और 5 से 7 अगर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सीधा ऐसी कुछ चीज़ ना उठाएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाए, ना ही कोई ऐसी चीज़ उठाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो। Try to pick up something that just slightly pushes you out of your comfort zone, जो आपको बस थोड़ा सा आपके comfort zone के बाहर पुश कर रही है, राइट? पूरा comfort zone के अंदर होगा तो कुछ सीखोगे नहीं, एकदम बाहर चले जाओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। देन ग्रेजुएट, सो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इजी, ग्रेजुएट टू डेंसर टेक्स्ट एज यू इम्प्रूव, रीड अक्रॉस जॉनरास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग जॉनरा में आपको पढ़ना है। इनऑर्गेनिक की बात हम तब करेंगे जब हम इनऑर्गेनिक वाले स्टेज पे होंगे, अभी हम लोग ऑर्गेनिक वाले स्टेज पे हैं बिकॉज कैट 2020 काफ़ी दूर है, ठीक है। देखो ये जॉनरेज देखो पिछले आरसीज के क्या क्या थे, एंड पिछले साल के पहले जो कैट पेपर्स उसमें अलग अलग जॉनरा से मतलब आरसीज पूछे गए, फिलोसफी एंड रिलीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये वगैरह वगैरह है ना, बहुत कुछ है। एंड देखो एक और चीज़ है, ये एक्चुअली मैंने एक मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आपका अनअकैडमी प्लस पे, एंड मैंने उसके बारे में एक्चुअली एक सेशन ऑलरेडी लिया था यूट्यूब का, मैं वापस से शायद एक बार आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये ग्राफ एक्सप्लेन किया कि आपका आरसी का परफॉर्मेंस 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, कि आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है और आपका एक्सपोजर कितना अच्छा है अलग अलग जॉनरीज के साथ, ठीक है। दोनों जब आपके ज़्यादा होते हैं तब आपका आरसी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। नॉर्मली एक स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करता है, जिसका एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी आप 50% मान लो, एक्सपोजर तो हर किसी का कम ही होता है बिकॉज बहुत कम लोग, हर जिसको अगर कोई एक तरह की किताब पसंद है तो वही पढ़ता रहता है, किसी को रोम कॉम पसंद है तो रोम कॉम पढ़ता रहेगा, किसी को थ्रिलर पसंद है तो थ्रिलर पढ़ता रहेगा, कुछ लोग तो बस अकेडमिक की किताबें पढ़ते रहते हैं। सो एक्सपोजर इज यूजुअली वेरी लेस फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनलेस द पर्सन हैपेंस टू बी अ voracious. So this is there are whenever you prepare other questions to be answered. अभिषेक, आप जो लेटिन में लिखा हुआ है कोई एक there's a pistol on which it is written, on which it is engraved, which says that victory loves preparation. Okay, so well, and you want to be victorious, right? You want to be victorious, I'm sure. So if you want to be victorious, you better prepare. Okay, so because victory loves preparation. That's it guys, from my side, and thanks for being such a wonderful audience. I'll see you guys later. Have a great have a restful night, and I'll see you later. I'll see you tomorrow. In fact, I have a YouTube session tomorrow in the afternoon. Okay, thank you so much guys, thanks a lot.